Hello bachcho, let's read the question. The question says that for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 multiplied with z2 is equal to real part of z1 multiplied with real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. So in this question we are given with two complex numbers z1 and z2, and we have to prove what? We have to prove that whenever we multiply two complex number, their result is equal to difference of product of real parts of those complex numbers and product of imaginary parts of those complex numbers. तो जब भी हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो उनके रियल पार्ट्स के प्रोडक्ट और इमेजिनरी पार्ट्स के प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है. So let's start the solution by understanding the key concept here. So key concept here is product of two complex numbers. So the product of two complex number जो होता है वो similar होता है जैसे हम दो binomials को multiply करते हैं. The same way we multiply the complex numbers also, and whenever we multiply iota with iota, its result is always equal to I square, which is also equal to what? It is equals to -1. तो ये informations हम use करेंगे इस result को prove करने के लिए. So let's start the solution by taking z1 as a plus ib. Here real part of z1 is a and imaginary part of z1 is b. Okay, let's take z2 here. z2 is equals to x plus iy. So here real part of z2 is x and imaginary part of z2 is y. Now it is asked us to multiply these two complex numbers. So let's multiply here z1 multiplied with z2. So we have to multiply a plus ib multiplied with x plus iy. So as I told that whenever we multiply two complex number, it is similar to what? It is similar to the प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल्स. जैसे हम बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वे. तो बायनोमियल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म लेते हैं बायनोमियल का और सेकंड बायनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट इज सिमिलर टू a मल्टीप्लाइड विद x प्लस आई वाई प्लस आई बी का मल्टीप्लाई आई बी मल्टीप्लाइड विद x प्लस आई वाई. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a इंटू एक्स विल गिव अस ax, a इंटू आई वाई इज गोइंग टू गिव यू आई ए वाई प्लस आई बी इंटू एक्स इज गोइंग टू गिव अस आई बी एक्स एंड आई बी इंटू आई वाई इज गोइंग टू गिव अस प्लस आई स्क्वायर बी वाई. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ए एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड दैट आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो दैट विल बिकम माइनस बी वाई. रीअरेंज करेंगे तो विल गेट ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स. सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है z1 और z2 का. वी गॉट इट एज ax माइनस बी वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स. नाउ हमें इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है. इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. रियल पार्ट ऑफ z1 into z2. So real part is what? Real part is the term which does not contains iota I. So here if we look into the product, we can see that here ax minus by is the real part. Ax minus by.
ax minus by. So if we look here, a is what? A is the real part of z1. So I can rewrite is that a is the real part of z1. X is what? It is the real part of z2 minus b is what? B is imaginary part of z1 into y is imaginary part of z. Hence it is proved. Hence we have proved that the product of two complex numbers is equal to the product of real part of z1 real part of z1 into real part of z2 minus product of imaginary part of z1 and imaginary part of z2. So I'm sure everybody must have understood it well. Thank you. Best of luck.